नमस्कार। आज इस बेहद खास और यूनिक वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। दैनिक जागरण और अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के प्रयासों और कोलैबोरेशन से आज हम इस वेबिनार को मुमकिन कर पाए हैं। इसका मोटिव है उन तमाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से कनेक्ट करना जो कि अहमदाबाद यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या नए और पाथ ब्रेकिंग इनोवेशंस हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में क्या कुछ रेवोल्यूशनरी और प्रॉमिसिंग कर सकते हैं, और फाइनली प्लेसमेंट्स का क्या स्कोप है। इन सभी पॉइंट्स को और इसके अलावा और भी कई सवालों के जवाब हम आपको इस वेबिनार के जरिए देंगे, क्योंकि हमारे साथ अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से कुछ बेहद खास और एमिनेंट गेस्ट जुड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक विशेष बात हमारी सभी ऑडियंस के लिए कि आप सब अपने सवाल हमारे गेस्ट से पूछ सकते हैं चैट बॉक्स का यूज करके। तो ध्यान से हमारा पूरा डिस्कशन सुनिए और अपने सवाल पोस्ट करें, जिन्हें हम इस वेबिनार के अंत में अपने गेस्ट से पूछेंगे। आगे बढ़े उससे पहले अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ विशेषताएं हम आपको बताना चाहेंगे। 2009 में स्थापित अहमदाबाद यूनिवर्सिटी एक अग्रणीय निजी और गैर लाभकारी अनुसंधान विश्वविद्यालय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश पर देश के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा इसे अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसकी स्थापना 1935 में करी गई थी, जिसे इंटरडिसिप्लिनरी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और रिसर्च थिंकिंग जैसे विशेष स्तंभों की नींव पर बनाया गया है। लिबरल एजुकेशन प्रदान करने के साथ साथ इट ऑफर्स बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टरल एंड एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो आर्ट्स एंड मैनेजमेंट थ्रू इट्स 6 schools and 7 centers। इस विश्वविद्यालय को गुजरात सरकार द्वारा उत्कृष्ट केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। NAAC द्वारा A ग्रेड मान्यता और गुजरात सरकार द्वारा GSIRF 5 स्टार रेटिंग प्राप्त है। इसके अलावा UGC अधिनियम की धारा 12B के तहत UGC द्वारा मान्यता प्राप्त है। साल की हाईली कमेंडेड यूनिवर्सिटी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजी इन द टाइम्स हायर एजुकेशन अवार्ड्स एशिया 2023 ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया है। अपने फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए AACSB's इनोवेशन दैट इंस्पायर अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया गया है। वाकई में इतनी सेलिब्रेटेड यूनिवर्सिटी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद मैं आश्वस्त हूं कि देश के बच्चे अपनी फ्यूचर एजुकेशन के लिए यहाँ पर अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं, अपना भविष्य तलाश सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं स्वागत करूंगी हमारे पहले गेस्ट का, प्रोफेसर पंकज चंद्रा, वाइस चांसलर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। A brief introduction into his illustrious career. He is a PhD in Operations Management, the Wharton School, University of Pennsylvania. His research and teaching interests include manufacturing management, supply chain coordination, building technological capabilities, higher education policy, and high-tech entrepreneurship. A director of IIMB and a professor of operations and technology management at IIMB. He also taught at McGill University in Montreal, University of Geneva, the Wharton School, University of Pennsylvania, International University of Japan, Cornell University, Renmin University, Beijing, and IIMA. He worked at the World Bank in Washington, D.C. Chairman of the doctoral program at IIMA and the first associate dean academic at ISB Hyderabad.
He's the first chairperson of the Center for Innovation, Incubation and Entrepreneurship at IIMA, Yashpal committee that relooked the Indian higher education system. He was involved in several startups. He has been a consultant to a large Indian and multinational firms. He also serves on the boards of several firms and institutions. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वेबिनार में। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अपने ओपनिंग एड्रेस से इस वेबिनार को आप संबोधित करिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति, थैंक यू वेरी मच। आपने जो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी हमारे बारे में कहा उसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे तीन चीजें बताने की कोशिश करूंगा इस छोटे से समय में। एक तो थोड़ा सा बताऊंगा कि अहमदाबाद यूनिवर्सिटी क्या है, कैसे सेटअप हुई है, और दूसरी कि क्यों आप अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने की आना चाहेंगे। Why is it that you should come to Ahmedabad University? और तीसरी चीज मैं बात करूंगा आपसे कि हमारी जो एजुकेशन है, हमारा प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है, हमारा करियर डेवलपमेंट का जो पूरी प्रणाली है, वो किस तरह से बाकी के इंस्टीट्यूशन से बहुत अलग है और क्यों अलग है। देखिए, आपने सुना ही होगा कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का काफी कुछ चयन हुआ, उसकी कमेटी का। उसके लोगों ने उसके बारे में अब काफी कुछ देश में उसकी इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया जारी है। लेकिन उसमें क्या खासियत ऐसी है जो कि देश में सब एजुकेशनिस्ट उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि क्यों अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, कैसे हम उस प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं। जैसे स्मृति ने आपको बताया, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी 2009 में शुरू हुई थी। इसका ट्रस्ट जिसने इसके बारे में खोज किया, सेटअप किया है, वो है अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी। अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी 1930 में इस्टेब्लिश हुआ था और बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहा है हमारे शहर अहमदाबाद के सारे नामी बड़े इंस्टीट्यूशंस के एस्टेब्लिशमेंट में। they have been responsible for establishment of IIM Ahmedabad, Physical Research Laboratory, National Institute of Design, CEPT, and many other institutions. And Ahmedabad University is its most recent institution, and perhaps its most ambitious project to build a multidisciplinary research university. जैसे स्मृति ने बताया, हमें काफी recognition मिले हैं UGC से और institution से regarding our research endeavor। तो ये हमारी काफी कुछ एक सोच रही है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दो चीजों के ऊपर के आधार पर बेस्ड रहता है। एक तो है कि किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को इनेबल करे, उनकी पढ़ाई लिखाई तो एक तरफ है, बट उनके सेल्फ डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ उनका ध्यान रखे। और दूसरा है कि किस तरह से वो दुनिया से अच्छे फैकल्टी को लेके आए जो कि रिसर्च से अपना कंट्रीब्यूशन दें सोसाइटी में। And this is perhaps the most unique aspect of Ahmedabad University. We're a research university. As was said, we have 4 big schools: a school of engineering and applied science, a school of arts and sciences, where mathematical and physical sciences as well as biological sciences are located, and you'll hear more about it in times to come. We have a school of management and a school of public health. But more than that, we have many research centers. These are centers of excellence, where research happens in variety of domains that range from heritage management, use of technology in heritage. There's an International Institute of Cosmology and Space. There's a very interesting center that we have called Venture Studio, which actually supports our young students and people around for building startups.
So it's a full-fledged university which assists you in terms of development of your perspective, your deep skills, and also guides you towards a very interesting, employable, and a future career. Our most interesting aspect is the fact that we perhaps have one of the best faculty of most institutions in this country. Our faculty have studied and done their PhD at some of the best places around the world. And as you will see, please pay attention to the backgrounds of the three other colleagues of mine, Professor Kale, Parth Sarvate, and Professor Raghavan, who will talk to you. Please pay attention to the places where they've done their undergraduate and PhD. That's the representative sample of the kind of institution. We have faculty who come from Stanford and Harvard and MIT and Chicago and Yale and many other places around the world, which implies that your curriculum is designed by some of the best minds, and your teaching is done by people who are very contemporary and at the cutting edge of both their research, and you learn from them when you come in. We're a small school. We believe in having a close relationship between our students. We have somewhere around 3,800 students, and we have about 260 faculty, of which 160 are full-time, and the rest 100 are visitors who come from all over the country and the world, who come and spend time and teach courses with that, people from industry, people from other universities, and globally. We are interestingly located, we're an urban campus, and we're located right in the middle of the city, in an area which is the education district of Ahmedabad. I don't know if any of you who are viewing and listening to this talk have ever visited Ahmedabad, but we're located in an area where there are about 20 institutions. So we are 5 minutes away from IIM Ahmedabad. We're about 10 minutes from NID. We are 2 minutes away from Gujarat University. We share a boundary wall with CEP. What it does is it creates a very interesting academic environment around, which is very vibrant. Our campus is spread over 150 acres of land. We have our own facilities, which are designed by some of the best global architects, and which create an ambience and an environment which is very pleasant and amiable, both for purposes of learning as well as building of one's own perspective and personality. There's one last thing that I will also tell you now, which I think makes us stand out over others. One is that our education is about reimagining the classroom. We are not your very standard, routine, rote learning, rote examination kind of an institution. If that's the kind of institution, that's the kind of learning you're looking for, I think you should not look for that. But if you are looking for it, then we are not that kind of an institution. We are an institution which is about engaging to learn, motivated by some of the big questions and big problems that surround us. And much of our education, I'll talk again about it, is in that frame. The second part that I'll definitely like you to know is that we have a very strong philosophy, which is around supporting our students in their education. We believe that not a single student or single meritorious student should go away for want of resources. So we are very strong in terms of providing financial aid. More than 20% of our students are provided financial aid, and we support our students every which way in terms of their education here. So that's the first part that I thought I'll introduce our institution to you.
Let me talk to you about why Ahmedabad University is a very interesting and an important place for any young person looking to study. First and foremost, if you are looking and you're wanting to study and learn at a serious place, then we are that kind of a place, and only then should you come to us. We are a very serious academic center. We pay a lot of attention to learning, teaching, working with our students, and we expect a lot from our students in terms of their academic rigor. As I mentioned earlier, our faculty is perhaps one of the best. That's another reason that you should definitely explore the possibility of looking at us. We are located in perhaps the safest city in India. Ahmedabad is one of the safest cities. It's not unusual to find a young person, a boy or a girl, on a scooter or on an auto moving around from one part of the city to another at midnight and feel very safe about it. It's a very vibrant city, and a city where there's a lot of industrial development that's happening around. It's a culturally rich city. We have a great location, being located in the middle of the city. Within a 10-minute radius, young people will find lots of things to do. You'll find museums, you'll find theaters, you'll find places which run workshops, you'll find cafes and so on and so forth, which will actually enhance the quality of your life in a city. So that's another very important feature I think you should know. We also have a very strong internship and placement program. I'll talk to you a little bit more about it later, but we have almost 100% placement every year. And our placement is always open. It remains open till the last student is placed with the help of our career development center. We have strong connect with the industry. Our board comprises of some of the best industrialists in the country, and that support lends itself or takes the shape of deep internships, very interesting placements. I'll talk a little bit more in a few minutes about it. But many of our students go every year to study abroad, almost 40 to 50%. We have also a very unique educational philosophy, and I'll spend more time about it. We believe in holistic education. We don't believe that education should happen in a silo. Many a times you go to an institution, if you want to study physics, you'll only go and study physics for 4 years, not realizing that there are many other disciplines in science and outside science that actually make you a better physicist. Same is true in engineering. An engineer solves problems. And to solve a problem, you need to understand what is the nature of problem, whose life you're going to improve, and how do you find science and technology-driven solution for it. All of it requires a holistic thinking, and we provide that. So we help in you becoming a whole scientist or a whole engineer, if you may. Our education at Ahmedabad University is also very flexible. You will discover what is it that you're interested in. You get to choose the courses that you want to take. There's somebody who says, I want to keep my Wednesday free because I want to learn music, or I want to do sports, or I want to do a startup. You can actually adjust your timetable in such a way so that you can keep that kind of time at your disposal. So there's a lot of flexibility and choice that a student gets in terms of determining what courses they want to take, what electives they want to take. And every time we are upgrading the electives, changing it every year. So the most latest challenge that is appearing, or the latest technology that's showing up,
you'll actually see it in the classroom. You can change your major. We call a degree, and then within the degree, your subject that you choose, we call it a major. You can change it. So if you're studying math and after 4 years, you think, oh, you know what? I love physics more. You can actually go and change your major and start studying physics. You can study both math and physics and do a major and a minor. You can also study a science subject or an engineering subject as a major and do your minor in management, or your minor in humanities or social sciences or performing visual art. That's the nature of flexibility that the institution provides you. We do dual degrees, so you can do 2 degrees in 5 years of time. You can do a bachelor's in one and master's in another. So it's a very interesting, flexible place. We all, by the way, all our undergraduates either in the final year complete undergraduate thesis or do a capstone project, which is a problem from the society or industry, which a group of students from different schools come and solve together. I think these are some very critical reasons that should make Ahmedabad University be an option for you to consider. If you are looking for this broad, deep education, if you are looking to build your own perspectives, then I think Ahmedabad University is something you should definitely consider. Let me make one more one set of points, and then I'll stop. In terms of what is unique about Ahmedabad University's education process. I think we are reimagining the curriculum. There is no institution of our kind in India. We are, most of us here on the screen and the senior leadership and at the university, we've actually taught, we've studied at some of the best places globally and best places in India. We know what is education at other places, and we are redesigning it and redefining it for the 21st century. We're very student-centric, as I mentioned to you. There's an opportunity to customize your own learning in terms of choosing the kind of things that you would like to learn. Our education is broad. We help you become broad, we help you become deep, and we help you become to build an integrative thinking. You know, many times when we ask our kids in class 12, what subjects are you taking? And they'll say, you know what, I'm doing physics, chemistry, math. And then we ask them, so what do you find common amongst them? And they say, no, there are 3 different subjects. Actually, I must tell you, they're so interrelated. Today, a discovery in biology cannot be done unless you bring in a computer scientist, an electrical engineer, a chemist, a mathematician, or a statistician into the team. That's the nature of how the world of industry is working. So as a result, much of our education is focused on 3 principles. One is interdisciplinarity. You'll find many different professors from different subjects in the same classroom. You'll get a biologist and a historian in the same classroom. You'll get a physicist and a chemist in the same classroom teaching a course. So it's very interdisciplinary. We bring multiple knowledge systems to answer a question. And this is the need of the day. This is what the future work is going to be. This is the skills required for the future of work. The second pillar of our education is project-based learning, learning by doing. You will hear about it later today, that many of the experiments that we'll do in our own labs, you have to set up and build the equipment. Why? Because we want you to learn that entire process as well, and think more deeply about the science. And third is learning to ask the right questions. If you're able to ask the right questions, you know, you will find answers yourself in a very, very interesting way. So that's another characteristics. Many of our courses are project-based.
right from beginning to end, you do projects. So which gives you the confidence, and you become industry ready when you are looking for employment, or you become very attractive if you look for graduate education outside India. We have a very interesting interdisciplinary core called Foundation Program, and I'll take a couple of minutes to talk to you about it. So we asked ourselves this question: what are 5 or 6 things that every Ahmedabad student should learn, irrespective of what you're coming here to study? Whether you come here to study physics, or you come here to study mechanical engineering or computer science, you need to go through what is known as the Foundation Program. And it does 6 things. It teaches you about communication. It teaches you about data science. You learn about constitution and civilization. You learn about behavior. You learn about biology and life, and you learn about new materials. Why? Because 2 of them are skills. 2 of them build your perspective. And the last 2 actually are areas of innovation. So we are making you more familiar with the requirements of the 21st century. But we do it interestingly and very differently. When you come to Ahmedabad University, the first thing that you'll do is you'll actually enter into a studio. I mean, it's called a Foundation Studio course. And the studio course are around 4 grand challenges. Okay, so you'll do 4 courses, or 4 subjects, if you may. One is around water. The second is around climate change. The third is around democracy and justice. And the fourth is around neighborhoods, which is a way of talking about urbanization. Nobody can, today say that these are not the big challenges that the country faces, or the world faces for that matter. And through water and through climate change, you learn data science, you learn biology in life, you learn about behavior, you learn about communication. So it's in a very holistic, interdisciplinary way. You learn about larger things on society and think about your technological and scientific solutions right from beginning. So you learn the theory and you learn the world of application. And what does it do? It makes you holistic. It makes you think far more broadly and deeply. And most importantly, it actually makes you very attractive to employers. So that's, you'll understand why science is important, why engineering is important in the larger society, and you get to use it so very well. We offer many programs. There's a dual degree program that we offer. We've recently introduced a very interesting offering under the title of BXMX. It's a program where you can come and do, let's say, a bachelor in technology and a master and an MBA all within 5 years. You can come and do a bachelor's in physics and a master's in quantitative finance all in 5 years. By the way, our undergrad program is 4 years. So just by adding 1 additional year, you come out with a master's degree. And just to add to you, in investment banking, private equity, in many other areas of finance, the most sought after people are not necessarily finance professors, but actually physicists. These are people who carry amazing skills and which are very useful in terms of doing modeling of financial instruments. So that's a nature of our education. We're a very, very forward-looking 21st century institution and a very exciting place to be in. I'll stop here, Smriti, and perhaps take in questions or comments or other things that you or others might have going forward. Absolutely, Professor Chandra. It was amazing listening to you. मुझे यहाँ इतनी दूर आपसे बैठ करके एक यूनिवर्सिटी का एक होलिस्टिक अप्रोच समझ में आया. And being someone like millennials के लिए मुझे लगता है कि this is something really enticing, क्योंकि हम लोगों के टाइम पे जैसे डायनेमिक जो एटमॉस्फेयर है एकेडमिक्स का,
इतना अवेलेबल नहीं था, बट कंसिडरिंग हाउ रैपिडली द एजुकेशन इज अंडरगोइंग चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, और जब हम बात करते हैं विच आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैज आल्सो अंडरलाइन कि अमृत काल जो आने वाले 25 साल में है उनमें एजुकेशन इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, एक बहुत अहम और बड़ा रोल निभाने वाला है एजुकेशन सेक्टर। और एकेडमिक्स को जिस तरह से स्ट्रेंथन करने का प्रयास कर रही है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, और आपने कहा रीवैम्पिंग एंड रीडिजाइनिंग एजुकेशन सिस्टम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ 21st सेंचुरी, मुझे लगता है मेरे लिए ये बहुत बड़ा टेक अवे है यहाँ से। हालांकि आपने मुझे अहमदाबाद के बारे में बताया और किस तरह से रात में आपने भी बताया कि 12 बजे उसके बाद भी यू कैन फाइंड पीपल गोइंग अराउंड द सिटी आराम से, यंगस्टर्स। मैं एक और चीज समझने की कोशिश करना चाहूंगी कि लाइफ इन अहमदाबाद को अगर मैं बेहतर तरह से समझना चाहूँ तो आप कैसे समझाएंगे, क्योंकि अहमदाबाद को बोला गया इट इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज टू लिव 2020 में, बोला गया था ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और टाइम मैगजीन में भी इसको बोला गया है कि 50 बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड टू लिव। तो इस पर आप और अगर एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो हमें कैसे समझाएंगे कि एक अहमदाबाद एज अ सिटी देख करके क्या कुछ ऑफर हो सकता है? नहीं, ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अहमदाबाद तो बहुत कल्चरली रिच शहर है। एक तो है कि ये वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। यहाँ से 4 घंटे की दूरी पे आप में राजस्थान पहुंच जाते हैं। आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो काठियावाड़ है, पोरबंदर है, सौराष्ट्र का एरिया बनता है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ौदा है, सूरत है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और आगे मुंबई है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंगली लोकेटेड शहर है। इस शहर में बाय द वे यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पे लोथल है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन टाइम्स का बड़ा भारी यहाँ पे सिविलाइजेशन रही है। एक पोर्ट सिटी हुआ करता था उस समय। अहमदाबाद के आसपास क्राफ्ट का बहुत बहुत जबरदस्त प्रचलन है। पाटन में इंटरेस्टिंग एरिया है। यहाँ से पास में कच्छ है जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट का एक नई सोच विचार और विचारधारा शुरू हुई है। और तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अहमदाबाद बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया से सराउंडेड है, एंड इफ यू आर लोकेटेड इन अहमदाबाद यू एक्सेस द रिचनेस ऑफ दिस प्लेस वेरी क्रिटिकली। शहर के अंदर ही साइंस सिटी है। लॉट्स ऑफ पीपल एक्चुअली यंग पीपल गेट टू go to the science city. There's a हमारे प्रोफेसर रंगराजन और बताएंगे इसके बारे में, वो इससे जुड़े भी हुए हैं। तो आपको वहाँ पे म्यूजियम्स हैं, आपको वहाँ पे शोज होंगे, वहाँ पे साइंटिस्ट और एप्लीकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये एक एजुकेशनल सेंटर भी है। तो डिजाइन से, मैनेजमेंट से और आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग से भी लोकेटेड काफी चीजें हैं। So a student coming here gets a very holistic way of developing themselves because lot of exposure, they have access to lot of opportunities and get exposed to. It's also a city of music, by the way. People don't know that today in the evening, and we have several cafes on our campus, and one of our cafes there is a performance event in the evening on blues and jazz. So एक तरफ तो इस तरह का म्यूजिक है, दूसरी तरफ कभी ट्रस्ट in one of its colleges also hosts in January probably one of the most well-known music festivals of India, of Hindustani classical, known as Saptak Music Festival. We have very strong sports facilities. This, by the way, for those who are sports fans, Ahmedabad is pitching for hosting the Olympics in 2036. Of course, you would have graduated from an institution by that time, but it also is telling you the kind of facilities that the city has for sports people. By the way, we have several young people on our campus who represent India, and we provide a lot of support to them. I have already talked to you about how safe the city is. There's a very interesting
Sabarmati river front that has been created, which is an interesting place for young people to hang out, and you know, people jog along that riverfront, they will bicycle there. So there's lots of opportunities. And by the way, last thing I have to tell you, it's a foodie's paradise. Ahmedabad is absolutely an amazing place for food and cuisine. And by the way, there are parts of the city that open up only at 8 p.m. in the night, and they open till 2 a.m. in the morning for food. And you will find lots of young people hanging out there. And it's possible because it's a safe city. You know, if it was not safe, you wouldn't be able to do it in that sense. So it's a culturally very rich city, and it has a large city facilities in a relatively mid-sized cities environment. So moving around becomes very easy. Cost of living in Ahmedabad is much, much lower compared to other big cities. I hope that answers a little bit of, gives you a picture of Absolutely, प्रोफेसर चंद्रा, ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने एक पिक्चर चल रही है, क्योंकि अभी कुछ साल पहले ही मैं अहमदाबाद होकर के आई थी। तो जो सबसे पहले चीज थी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक इज व्हाट द इंप्रेशन आई हैड, और उसके बाद खाने का जो इतना वैरायटी था कि आई वाज कंफ्यूज इन माय स्टे ऑफ 3-4 days. आई कुडंट कंप्लीट ऑल द क्यूजीन्स देयर. I think it's a beautiful, lovely place. Not only the place, everything is organized. When a person, जब कोई माता पिता अपने बच्चे को किसी शहर में भेजते हैं, सबसे कंसर्न में 2 चीजें होती है, एक सेफ्टी होता है, एक खाना होता है. मुझे लगता है ये शहर दोनों ही एस्पेक्ट्स में पूरी तरह से मुझे लगता है कि निपुण है और फुलफिल करता है. आपने हालांकि मुझे करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में और अपॉर्चुनिटीज एट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी एक स्नीक पीक तो दिया था अपने एड्रेस में स्टार्टिंग में, मगर मैं इन डिटेल अगर समझने की कोशिश करना चाहूँ तो ऐसी क्या डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज और प्रोस्पेक्ट्स हैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कंसिडर करना चाहेंगे? नहीं, आपका ये सवाल बड़ा अच्छा है. देखिए, ऐसा है कि लोग बहुत चीजें ये नहीं समझ पाते हैं कि एक जो बच्चा जब ग्रेजुएट करके सक्सेसफुल विद इन कोट बनता है कि या उसको अच्छी जगह एडमिशन मिल गया मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, या उसको अच्छा जॉब मिल गया, तो उसके पीछे बहुत लोग जुड़े होते हैं. उनके पेरेंट्स हैं जिन्होंने उनको वैल्यूज, उनको डिसिप्लिन, वो सब दिया है. उनके पीछे इंस्टीट्यूशन है जो कि फर्स्ट ईयर से उनके साथ काम करना शुरू करता है. उनके टीचर्स हैं जो कि उनको इन डेप्थ डिसिप्लिन के बारे में सिखाते हैं और साथ साथ उनको थोड़ा प्रोफेशनल बनने की भी ट्रेनिंग देते हैं. हमारे यहाँ बहुत बड़ा सेंटर है, उसका नाम है करियर डेवलपमेंट सेंटर, विच इज रन बाय प्रोफेशनल्स. वो फर्स्ट ईयर से जैसे ही ओरिएंटेशन होगा हमारे यहाँ स्टूडेंट को, उस दिन से उनके साथ वो जुड़ते हैं और कहते हैं कि एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए, so that you become successful by the time you reach 4th year, आज क्या करने की जरूरत है. And we have a full-fledged workshops and training programs, and we have people from industry who come on a very regular basis to talk to them and expose our young kids to what does working in industry mean. एक मैकेनिकल इंजीनियर है या केमिकल इंजीनियर है या कंप्यूटर साइंस वाला है, उस इंडस्ट्री में होता क्या है? Am I the right person for that kind of industry? या should I look for something else? एक बैंकिंग में अगर हमें जाना है तो वहाँ कैसे? In fact, in management, we have 1 credit courses on industry where we tell kids about it, and they're groomed in some ways. You know, groomed is not the right word. You know, encouraged and supported so that they become. So that's one part of it. The second important part is the outcome. So ये तो input वाली बात हो गई है कि process कैसा है हमारा, जो कि एक बच्चे को की क्षमता बढ़ा रहा है कि वो आगे बढ़े. In fact, our philosophy is that we should make our young students jump 6 feet when they think they can only jump 3. And उसके लिए ये सब जो processes हैं ये बनी है. Outcome क्या है? So 50% of our students go for masters. All right. And they go to the best institutions in India. They'll go to Indian Institute of Science. They'll go to IIMs. Every year we have about 12 to 15 kids going to IIM. This year alone, we've had kids, our engineering kids, 2 of them
one going to IIM Bangalore, another one to IIM Calcutta, and then many to other IIMs. In fact, over the last 5 years, 3 gold medalists at IIMs, one at IIM Ahmedabad, another one at IIM Bangalore, and third one at IIM Lucknow have been our undergrads. We have kids every year who will go to best of institutions globally. So we've had kids every alternate year. They may go to a Stanford, they'll go to Oxford, they'll go, this year we've got kids going to Carnegie Mellon to do masters, NYU, they're going to Purdue, they're going to London School of Economics, King's College, Babson. So about 50% of kids actually make it to some of the top institutions globally. And I think they make it because they have been trained very holistically. In that, actually, we will compare with any top institution in the country. You pick the top institution. Proportion-wise, these kids do very well. So that's 50%. 30% of our students go back to family business or do startups. By the way, because we are located in Ahmedabad and in Gujarat, which is very rich in terms of entrepreneurship, they go back to their family business. And many do startups, and I'll be happy to talk a little bit about startups as well. And 20% look for jobs. And the kind of companies in which they get in every year, they'll go to a Google, they'll go to Infosys, they'll go to TCS, they'll go to Qualcomm, they'll go to ITC, they'll go to Arvind, they'll go to Asian Paints, and they'll go to banks, KPMG, and accounting companies and consulting companies and so on and so forth. So this year, we have, up until recently, I think we have 94% placed at the time when the classes got over. By now, I think almost all students have gotten placed. They had 150 companies who came to interview our students, about 140, 160 students who are looking for jobs, and all of them got into good places. Our salaries are also very, very competitive, especially those from the engineering school, which will, our median is very high. And of course, there's a distribution also around it. So that's about the kind of companies. We also have a very interesting focus on STEM women, girls who actually want to study STEM subjects, science, technology, engineering, and math. And we encourage them through support. In fact, this year, there's an interesting, very interesting company out of Pune called Forbes Marshall that actually selects a handful of girls from across the country for internship. And 3 of our young engineering students, girl students, made it. And they were placed, they were taken all over the country. They went to Calcutta, they were in 2 other cities. Professor Kale, I'll request him to talk a little bit about it later. And they've done very well. And so it's a testimony to the fact that if you train a student very well, if you pay attention to their education, if you prepare them well, they'll get placed well, whether they want to go for graduate studies or they want to take up a job. And I think we are in that kind of a situation. It was again lovely, Dr. Chandra. मुझे लगता है कि explain करने से ज़्यादा you have this ability to visually create the scenario wherein like I feel that I am empowered. चाहे STEM की बात हो, चाहे आपने career opportunities or prospects की बात करी. I think this is not only overwhelming to see the way transformation is happening, and particularly जिस तरह से Ahmedabad University is playing a very pivotal role in this, that is really commendable. एक और चीज मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि what kind of partnerships and collaborations does Ahmedabad University have nationally and globally, as well as the startup ecosystem? सवाल का जवाब देने से पहले Professor Chandra, I would request all our viewers, all our guests online who have joined us कि जितने भी उनके सवाल हैं they can post in the chat box, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास है कि maximum सवालों के जवाब हम अपने guest से ले लें.
इसके अलावा अगर कोई भी, क्योंकि स्टूडेंट्स के अपना अप्रोच होता है, मुझे लगता है प्रोफेसर चंद्रा, चीजों को देखने का, समझने का, और उनके पेरेंट्स का अलग होता है, तो व्हाटएवर क्वेश्चंस, व्हाटएवर क्वेरीज यू हैव, अगेन देयर इज अ रिक्वेस्ट कि आप चैट बॉक्स में उनको डाल दीजिए। हम इस वेबिनार के एंड में हमारे जो गेस्ट हैं उनसे ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर चंद्रा, प्लीज आंसर द क्वेश्चन प्लीज। तो मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा। एक्चुअली मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको जो हैं कि आप हमारे वेबसाइट पे आइए, थोड़ा www.asduni.edu.in। अगर आप अहमदाबाद यूनिवर्सिटी भी डालेंगे तो आपको तो मालूम है, पता ही चल जाएगा। एंड यू विल सी अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस दैट हैव we have partnerships that range from institutions in US, in Europe, in Asia, in Africa, from Stanford at one end, with whom we've partnered in the past, with Judge Business School, to many other places. We have exchange programs. So मैं समय कम है इसलिए नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको पूरा अबाउट अहमदाबाद वाले सेक्शन में मिलेगा। But just this summer, almost 86 of our students came back from international immersion as well as exchange programs. I want to talk to you a little bit about Venture Studio, which is our incubator. And अगर आप चाहते हैं कि हम startup करें, then we have a absolute amazing place which helps you, trains you, which kind of mentors you to identify a need and then provides resources for you to be able to do startups. We also have a very interesting program called Fellowship at Venture Studio. So कुछ लोग हैं वो by the time they reach the third year, they are very clear कि अब हमें कुछ internship करने की जरूरत है towards doing a startup. So they can spend a semester and a summer with Venture Studio and go through a whole process of doing a startup. And this you do in lieu of taking courses during the entire semester. So ये भी facility available है. We've incubated close to 140 startups from this incubator. So I invite all of you to come and visit Ahmedabad University and be part of this. Look for yourself, what is it that that a university like ours is doing. Absolutely, Professor Chandra. I think very powerfully you have created, visually you have created the scenario of the university, but I would really request you to show us what the campus looks like. Let's do that, Smriti. Let's show a video at this point, which will essentially give a picture of our institution and our facilities to a young students here.
बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रोफेसर चंद्रा जिस तरह से आपने बातें करी, वही सेम चीज हम मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सेम जो विजुअल्स हमारे सामने क्रिएट हुए थे इस छोटे से जो मूवी है उसके थ्रू, हमारे व्यूअर्स को भी वो सेम चीज क्रिएट करने में बिल्कुल ही ये इफेक्टिव रही है ये वीडियो। थैंक यू सो मच सर, बहुत पेशेंटली आपने हमारे सारी क्वेरीज को भी आंसर दिया है और बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ, जो भी मुझे लगता है क्लैरिटी देने में आप सक्षम रहे हैं। हमारे व्यूअर्स से एक और बार मैं अनुरोध करूंगी कि अगर आपके पास जो भी कोई क्वेरीज हो इस वीडियो से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आप प्लीज अपने सवाल चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। उन चैट बॉक्स से हम वो सवाल उठा करके हमारे गेस्ट से पूछ लेंगे। आइए अब आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं हमारे बाकी गेस्ट का। हमारे बाकी गेस्ट हैं प्रोफेसर राघवन रंगराजन, डीन स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, ही इज अ पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। Professor Sunil Kale, he is a Dean School of Engineering and Applied Science, and he is a PhD from Stanford University. And Mr. Parth Sarvate, he is a Director, Office of Admissions and Financial Aid, EDM from Harvard University. आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वेबिनार में। Thank you. और मैं शुरुआत करूंगी प्रोफेसर राघवन रंगराजन जी से, जो कि डीन है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज। सवाल पूछने से पहले अ ब्रीफ इंट्रो हिज इलस्ट्रियस प्रोफाइल। प्रोफेसर रंगराजन is a dean and professor at the School of Arts and Sciences, Ahmedabad University. He has earlier been the dean of students at Ahmedabad University. He was on the faculty of the Theoretical Physics Division at the Physical Research Laboratory, Ahmedabad, for over 20 years. His areas of research are cosmology and particle physics, and he works primarily on the processes that occurred soon after the Big Bang in the very early universe. In particular, his research has been on topics such as dark matter, the matter-antimatter asymmetry of the universe, and cosmic microwave background radiation. He obtained his PhD from the University of California in 1994 and his bachelor's degree from Princeton in 1988. He has been involved in programs that bring together college students and academic researchers. He is an editor of the journal Physics Education of the Indian Association of Physics Teachers. Welcome once again, sir. Thank you. Professor Rangarajan, would you please introduce the school to the audience? Sure. The School of Arts and Sciences के 5 विभाग है। एक है ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस, जिसमें हिस्ट्री, फिलॉसफी, लिटरेचर के प्रोफेसर्स हैं। एक है सोशल साइंसेस, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंसेस के सब्जेक्ट्स पे फोकस होता है। एक है मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेस डिवीजन, जिसमें फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एरियाज कवर होते हैं। एक है बायोलॉजिकल एंड लाइफ साइंसेस, जो बायोलॉजी पे फोकस करता है। और एक है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, जहाँ म्यूजिक, डांस, थिएटर, फोटोग्राफी जैसे एरियाज पर हमारे फैकल्टी हैं और वो कोर्सेज पढ़ाते हैं। जो ये स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस में हमारे बैचलर्स डिग्रीज हैं, मास्टर्स और पीएचडी डिग्रीज हैं। बैचलर्स डिग्रीज में हमारा बैचलर ऑफ आर्ट्स है, जिसमें साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, social and political sciences, philosophy, history and languages are 5 of the degrees within Bachelor of Arts honors. Bachelor of Science honors में physics है, computer science है, mathematical and computational sciences है। फिर हमारा एक ये 2 प्रोग्राम 4 साल के हैं। We have a very interesting 5 साल का integrated Master of Science in Life Sciences, जिसके बाद आपको एक बैचलर ऑफ साइंस इन लाइफ साइंसेज और मास्टर ऑफ साइंस इन लाइफ साइंसेज के 2 डिग्री मिलेंगे। दिस इज बेसिकली फोकस्ड ऑन बायोलॉजी। इसके अलावा तो हमारे पीएचडी प्रोग्राम्स तो है ही, क्योंकि हम एक रिसर्च यूनिवर्सिटी हैं, तो एक रिसर्च यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम्स होना बहुत ही जरूरी है। मैं बाद में जो प्रोफेसर चंद्रा ने हमारे डुअल डिग्री बैचलर्स मास्टर्स के बारे में भी मैं कुछ कहूँगा। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में क्या एक चीज है जो हमें यूनिक बनाती है, प्रोफेसर चंद्रा ने ऑलरेडी एक कहा है, एंड दैट इज कि हम एक रिसर्च यूनिवर्सिटी हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो सब एक्टिव रिसर्चर्स हैं। समटाइम्स मेरे से पूछा जाता है कि बैचलर्स डिग्री में ये क्यों महत्वपूर्ण है।
बैचलर्स में तो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स सिखाए जाते हैं। अब रिसर्चर तो मास्टर्स और पीएचडी लेवल पे अगर आपके प्रोफेसर्स रिसर्चर्स हैं तभी वो इम्पोर्टेंट है। आई डोंट अग्री विद दैट। देखिए, जब एक एक्टिव रिसर्चर आते हैं, एक साइंटिस्ट आते हैं आपके क्लास में आपको पढ़ाने के लिए, उनके ही हैज दिस पैशन फॉर हिज सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट। तो चाहे वो फिजिक्स सिखाने आ रहे हैं या बायोलॉजी सिखाने आ रहे हैं, तो वो उनका खुद का जो पैशन है सब्जेक्ट के लिए वो क्लासरूम में ले आते। दूसरा है कि हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो जहां मौका मिलता है तो क्लास में जो आजकल का कुछ भी नया टॉपिक है या नया एरिया ऑफ रिसर्च है, हम अपने क्लास में लगा ले इंक्लूड कर लेंगे। जैसे जस्ट एज एन एग्जांपल, क्लासिकल मैकेनिक्स के कोर्स में हम डार्क मैटर के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, जो इज एन एरिया ऑफ करंट रिसर्च। तीसरा है कि जब स्टूडेंट्स को रिसर्च प्रोजेक्ट करना पड़ता है, और हमारे यूनिवर्सिटी में थीसिस होता है फाइनल ईयर में या कैपस्टोन प्रोजेक्ट, तो आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो एक्टिव रिसर्चर्स हैं, तो जो प्रोजेक्ट आप करेंगे वो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे होगा जो विच आर करंटली रेलेवेंट। एंड फाइनली, जब स्टूडेंट को हायर स्टडीज के बारे में कुछ गाइडेंस चाहिए, ये जो भी प्रोफेसर हैं वो खुद उन्होंने पीएचडी किया है अच्छे जगह में, फ्रॉम विद इन इंडिया और अब्रॉड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी, प्रिंसटन, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, यहाँ के दीज आर द प्लेसेस जहाँ इन लोगों ने अपने पीएचडी किए हैं, तो दे कैन गिव यू गाइडेंस to how to get to the best places. So I think that is really important. And I'll say one more thing. मैंने तो साइंस के बारे में काफी कुछ कहा, बट जैसे प्रोफेसर चंदा ने कहा, हमारा एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी है। कहाँ लिखा है कि फिजिक्स के स्टूडेंट को फिलॉसफी में मजा नहीं आएगा, इतिहास पढ़ के मजा नहीं आएगा? सो इन आवर प्रोग्राम एक तो एक रिक्वायरमेंट है कि आपको अलग अलग डिसिप्लिन से, जो आपके डिसिप्लिन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं हो, आपको पढ़ना है। एंड हमारे स्टूडेंट्स ही हमें कहते हैं कि उसमें इतना मजा आता है कि सम ऑफ देम ने फाइनली डिसाइड किया कि आगे जाके हम उसी डिसिप्लिन में वी विल डू हायर स्टडीज। सो दिस मल्टीडिसिप्लिनरिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और एक और चीज है कि हमारे यहाँ माइनर का भी पॉसिबिलिटी है। तो एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जिनको मैथमेटिक्स में दिलचस्पी है, शी कैन टेक 6 कोर्सेज इन मैथमेटिक्स एंड गेट अ माइनर इन मैथमेटिक्स। एक लाइफ साइंसेस की स्टूडेंट को जिनको साइकोलॉजी में और पढ़ना है, शी कैन डू 6 courses in psychology and get a minor in psychology. So I think these are unique features of the science program and the general undergraduate program at Ahmedabad University, which should make, जो एक स्टूडेंट को काफी अपॉर्चुनिटीज देगा अपने इंटरेस्ट को डिस्कवर करने में, और अपने इंटरेस्ट और जिस डिसिप्लिन में अपना इंटरेस्ट है और एप्टीट्यूड है उसको फॉलो करने में। लास्टली एक और चीज मुझे कहना है, जो प्रोफेसर चंदा ने भी कहा, हमने एक BS MS प्रोग्राम लॉन्च किया है। आपका बैचलर ऑफ साइंस डिग्री फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंसेस में होगा, और मास्टर्स डिग्री क्वांटिटेटिव फाइनेंस में होगा। अपन ये जो लाइंस मैंने कहा बैचलर्स डिग्री के लिए, वो सब उनमें काफी मैथमेटिक्स आता है, और क्वांटिटेटिव फाइनेंस के लिए वो बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि आगे जाके मुझे फिजिक्स में मजा आया, पर आगे जाके मुझे PhD नहीं करना है, इसमें रिसर्च नहीं करना है, पर मुझे कुछ और करना है, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी का आप यूज द स्किल्स यू हैव लर्नड इन योर बैचलर्स डिग्री टू पिक अप अ डिग्री दैट कैन हेल्प यू गेट अ वेरी प्रॉमिसिंग जॉब एंड प्रोवाइड फॉर अ वेरी प्रॉमिसिंग करियर। आगे जाके आपके अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे होंगे। प्रोफेसर रंगराजन, बीइंग अ साइंस ग्रेजुएट माई सेल्फ, तो मुझे हमेशा से, जैसा आपने बोला मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी, तो जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के अलावा आई हैड अ ह्यूज इंटरेस्ट इन म्यूजियम्स एंड हिस्ट्री। तो मेरे अंदर ये हमेशा से मेरा मन था कि मैं इस साइंस के साथ साथ कुछ और भी परस्यू करूं। तो आई थिंक बैक देन दीज अपॉर्चुनिटीज वर नॉट अवेलेबल फॉर अस। और जिस तरह से मुझे लगता है कि टुडे द स्टूडेंट्स आर ब्लेस्ड, क्योंकि आपको अपना, मुझे लगता है मोर देन एकेडमिक्स, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। क्या आप साइंस सिर्फ
दुनिया के प्रेशर से या फैमिली प्रेशर से परस्यू कर रहे हैं, या साइंस आप जेन्युइनली करना चाहते हैं? साइंस में ज़ूलॉजी आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, या बॉटनी इंटरेस्टिंग लग रही है, या केमिस्ट्री या फिजिक्स? ये समझना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ये जो पाथ ब्रेकिंग वर्क है स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज दे करके एक बहुत अहम और कारगर काम प्रोफेसर रंगराजन ये कर रही है। अच्छा प्रोफेसर रंगराजन, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में जो लेबोरेटरीज हैं उनके बारे में ऐसा यूनिक फीचर क्या है जो स्टूडेंट्स को सिर्फ यहीं पे मिले, कहीं और नहीं मिल रहा, या एक ऐसा आपको लग रहा है रेवोल्यूशनरी चीजें इन लेबोरेटरीज में आप ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए? हमारे लैब्स के 2-3 चीज बहुत ही यूनिक हैं। एक है जो हमारे लेबोरेटरी के कोर्सेज में जो फिलॉसफी या पेडागोजी हम यूज करते हैं, जैसे फिजिक्स के लैब्स में, काफी कुछ लैब्स में ऐसा है कि हम स्टूडेंट को एक प्रश्न देते हैं, फिजिक्स का प्रश्न, और उनको वो प्रश्न आंसर करने के लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना पड़ता है, इक्विपमेंट डिजाइन करना पड़ता है, खुद अपने हाथों से इक्विपमेंट को बनाना पड़ता है, और फिर वो एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं। दूसरा है कि हमारे काफी लैब्स में स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है। बहुत से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि क्योंकि ये इक्विपमेंट बहुत महंगा होता है तो स्टूडेंट्स को उनमें छूने भी नहीं देते हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आर वर्किंग ऑन दिस इक्विपमेंट, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पहले से ही मिल जाता है। लास्टली, ये एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, हर एक प्रोफेसर कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो जो एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट हैं उनके लैब्स में तो काफी इक्विपमेंट है, और स्टूडेंट्स अपने थीसिस में या रिसर्च प्रोजेक्ट्स में उनके लैब्स में काम कर सकते हैं, उनको और भी एक एक्सपीरियंस मिलता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के साथ काम करने के लिए। बिल्कुल प्रोफेसर रंगराजन, कई बार तो ये होता है कि इक्विपमेंट्स बहुत होते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स यूनिवर्सिटीज में होते हैं, लेकिन उनको टच नहीं करने दिया जाता है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मना कर दिया जाता है कि नहीं, आप सिर्फ इनको देखिए, ऑब्जर्व करिए। तो वो ऑब्जर्वेशन से तो कुछ सीख नहीं सकते, मगर ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि एक प्लेटफॉर्म ये यूनिवर्सिटी दे रही है उन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को भी जो फ्रेशर्स हैं, कि आप जब तक आप उसको हाथ में लेके कहते हैं टच एंड फील नहीं करेंगे उन इक्विपमेंट्स को, आप एक्सपेरिमेंटेशन के लिए उनको यूज नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, इट रियली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एज अ स्टूडेंट कि आप ग्रोथ को नहीं देख सकते हैं। इट वाज रियली एक्सप्लेनेटरी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू प्रोफेसर सुनील काले, डीन ऑफ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज। ही इज अ PhD from Stanford University. A brief into his profile. Professor Kale has over 30 years of experience in teaching and research in mechanical engineering with a specialization in thermofluids. He began his career with Tata Consultancy Engineers, Bangalore, where he served for 3 years. Post PhD, he was a research assistant professor with the Mechanical and Aerospace Engineering Department of West Virginia University in the US for 4 years. He, as a faculty member at IIT, he served since 1989, and he has held several administrative positions, including Dean of Undergraduate Studies and Head of the Department of Mechanical Engineering. He has also mentored IIT Mandi and IIT Ropar on various aspects. So, a very warm welcome to you. And Professor Kale, आप क्योंकि इतना सब कुछ हम जान चुके हैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, तो एक बार मैं समझना चाहूंगी कि आप अपने स्कूल को, ऑडियंस को कैसे इंट्रोडक्शन देंगे, कैसे समझाएंगे ब्रीफली? ये 3 फैक्टर्स में बताता हूँ। पहला फैकल्टी है, दूसरा हमारे फैसिलिटीज, और हमारा करिकुलम। तो वी आर अ मल्टीडिसिप्लिनरी स्कूल and we have faculty who have expertise in computer science, electronics, mechanical engineering, and chemical engineering, and also applied physicists and applied chemists. So we bring a variety of cross-disciplinary thinking to our courses. We also have industry people coming and interacting and teaching courses. These are professors of practice who have been leaders in their own careers, spanning many decades in manufacturing, in electronics, in computer science, aeronautical engineering, subjects like that. So this brings a very important thing, which is industry approach to a very theoretical, otherwise a very theoretical background teaching. Now about our laboratories.
our laboratories are structured very differently from any other college. Instead of building laboratories based on subjects and doing a standard set of experiments, we have laboratories built around themes, and they are all integrated together. Some experiments are somewhat routine, but most of our experiments are open-ended, where students have to first think, why do I need to make a measurement? How will I make it? Which instruments I will use? And how do I put it together? And then they have to make it work and show that this is what the data looks like. So it's a lot of hands-on work. And in this process, one important learning that happens, things will go wrong. Engineering is where you see accidents happening, which never comes into the curriculum. But here students get a first-hand feel that when things go wrong, you have to come back, persevere, set it right, and then make it work. That's the way the engineering profession is. Now to come to our curriculum, half the credits are for engineering. And we have a large set of courses which we call the engineering foundation. These are courses that give you basic concepts and knowledge that cuts across all disciplines of engineering. Which means that if you have done these courses, you can intelligently converse on engineering with a marine engineer or an agricultural engineer or a computer science engineer. And this is true of every branch. All students study these courses, which could be like material science, energy, programming, microprocessors, and digital electronics. So these are courses everybody studies. This gives you some basic knowledge. And then we have a set of courses that give you skills. Instead of a classical drawing course, we call it and teach it as a course on visualization, which is to see the world around you, make pictures, and interpret things through pictures, communicate through pictures to others. It is not just engineering subjects in mechanical, but could also be the drawing of a house or electronic circuit, or for that matter, even life sciences, to say, okay, make a sketch of how a bird flies. Observe and sketch. The idea is to observe. That's where a lot of learning happens. Then we have course on product realization, where students first undergo some work in reverse engineering. So you take a object from everyday life, say a toilet flush or a microwave oven, open it up, figure out what is it there, why is it there, how it was manufactured, what are the materials used in it. And in parallel, they also get training on how to make things. Classical techniques, as well as computer-controlled machine tools, new materials like composites, all these are covered in our first-year product realization course. Then we have an interesting course called Design, Innovation, and Making, where they start by thinking, what is it that society needs? Who in society needs that? Come up with a specification, and then week by week, we take them through the standard process of design, which all industry follows, whether it is design of an aircraft, whether it's design of a car, whether it's any consumer device. All these companies follow a very structured way to engineering design. So we take students step by step through that, at the end of which they make a proof of concept and display it to public. We have another course on sensors, instrumentation, and experimentation. So when you talk of say things like Industry 4.0, you're collecting a lot of data. And all of this has to be understood, interpreted, and put to use. Then we have the core courses of a discipline. So this gives you all the foundational knowledge with a variety of applications that are related to that particular branch. Could be mechanical, could be chemical engineering, or computer science engineering. This gives you depth. And we also connect it very tightly with industry practice. The last thing I would talk of is a new set of courses on what we call integrative engineering. These will be courses where, after studying the engineering foundation courses,
you can go back to the object and see what are the quantitative ways in which this object got made, because no product belongs to any one particular discipline, not even software. So it could be a ventilator. It got aspects of mechanical engineering, computer science, electrical engineering, electronics, biology, life science, everything you need to understand to make a successful product. That's the type of exposure we give. And then, as has already been mentioned, we have internships, which is a well-structured program in industry. Capstone projects, which are different from classical projects in that here's a team of engineering students and students from management or arts and sciences who all work together on different aspects of a societal problem. They need to understand each other, look at different aspects of that technology and come up with a solution. So why do we do all this? We want our graduate to be as close to the world of engineering and engineering in practice as possible. And that's a big goal we set for ourselves. I think Professor Kale, it was very well answered. क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं, क्योंकि कई इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो ऐसा क्या अलग है? क्योंकि जब पेरेंट्स दे सीक आउट फॉर एडमिशंस तो वो यूनिकनेस देखते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ होलिस्टिक पैकेज Ahmedabad University which is offering the students. और viewers से मेरी ये request है that we are receiving a lot of questions on areas other than STEM. So Ahmedabad University has management and social science and arts also. So जितने भी सवाल हैं we'll be taking up at the end of our webinar. फिलहाल मैं रुक करती हूँ मिस्टर पार्थ सरवते जी का, और before putting across my questions to Mr. Parth Sarvate, he is a Director, Office of Admissions and Financial Aid, EDM, Harvard University. इनका एक brief profile है with his illustrious achievements. Parth Sarvate is the Director of Undergraduate Admissions and Financial Aid at Ahmedabad University. He has a master's degree in education from Harvard University and an MBA from IMDR Pune. He is also currently pursuing an executive doctoral degree in higher education from Boston College. Mr. Parth has over 2 decades of experience working in both school and education reform at scale and developing higher education institutions. He has previously worked with the University of Southern California, RPG Foundation, Azim Premji Foundation, and University and Shiv Nadar University as well. First of all, a very warm welcome, Mr. Parth Sarvate. सबसे पहला जो सवाल मेरे मन में इस वक्त आ रहा है वो ये है कि एक स्टूडेंट जो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता है, प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या होता है प्रोसेस? गुड आफ्टरनून स्मृति, बहुत बहुत धन्यवाद. टू अप्लाई टू अहमदाबाद यूनिवर्सिटी इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. कोई भी स्टूडेंट हमारे वेबसाइट पे जाके एक पोर्टल में अप्लाई करते हैं और वहाँ उन्हें उनके पर्सनल डिटेल्स, उनके फैमिली के डिटेल्स, उनके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स या मार्कशीट्स अपलोड करने होते हैं. उनको अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, करिकुलर एक्टिविटीज इसकी डिटेल्स डालनी होती हैं. और हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखने को कहते हैं, जहां हम एक सवाल पूछते हैं उनसे. वो सवाल होता है उनके बारे में, क्योंकि हम उन्हें अच्छी तरह जानना चाहते हैं. तो वो हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट अपने बारे में कुछ लिखे, ताकि हम समझ सकें कि उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या उन्होंने क्या सीखा है. उसकी वजह से फिर वो क्या सीखना चाहते हैं ये हम जानना चाहते हैं, ताकि हम उन्हें अच्छी तरह पहचान पाएं. तो ये प्रोसेस है और ये बहुत ही आसान प्रोसेस है. हमारी वेबसाइट पे जाके सिर्फ आपको अप्लाई करना है. आप क्लिक करेंगे, आपको एक फॉर्म खुलेगा और फिर उस फॉर्म को के वेरियस टैब्स हैं जो आपको बताएंगे कि आपको क्या भरना है. तो ये बहुत आसान सा प्रोसेस है. मुझे सर्वते एक और चीज समझना चाहूंगी कि फाइनेंशियल एड का क्या प्रोसेस होता है? जी, सो वी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ जनरस फाइनेंशियल एड, बोथ मेरिट स्कॉलरशिप्स एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स. मेरिट स्कॉलरशिप्स के लिए किसी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं हमारे क्राइटेरिया पे हम एक होलिस्टिक असेसमेंट करते हैं हर स्टूडेंट का. और जो टॉप स्टूडेंट्स हैं जो हमें अप्लाई करते हैं, हम उन्हें ऑटोमेटिकली मेरिट स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं. और जहां तक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स का सवाल है,
वो है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जब वो अप्लाई करते हैं हम उनको पूछते हैं उनका फैमिली इनकम क्या है, एनुअल फैमिली इनकम, और उसके बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि उन्हें फाइनेंशियल एड देना है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एनुअल फैमिली इनकम बिलो 5 लाख है उन्हें हम एक फुल ट्यूशन वेवर देते हैं, और जो स्टूडेंट्स बिटवीन 5 एंड 10 लाख है उन्हें एक पार्शियल ट्यूशन वेवर मिलता है। तो इसका प्रोसेस ये होता है कि जब वो सिलेक्ट करते हैं और या भरते हैं कि उनका फैमिली इनकम इतना है, तो उन्हें पूछा जाता है कि क्या आप फाइनेंशियल एड लेने में इच्छित हैं। तो जब वो सिलेक्ट करते हैं वो ऑप्शन, तो उन्हें फिर और हमको कुछ पेपर्स देने पड़ते हैं, इनकम टैक्स के या कोई सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने इकट्ठा किए हैं वो सब देने पड़ते हैं, बिल्स देने पड़ते हैं, और फिर ये हम अपने एक एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ शेयर करते हैं जो एक ऑडिट प्रोसेस करते हैं। उस ऑडिट से हमें पता लगता है कि ये करेक्ट पेपर्स हैं, और उसके बेसिस पे हम उन्हें ग्रांट ऑफर करते हैं। मिस्टर सरवते, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि कोई भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जब कोई यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप का रहता है, और मुझे लगता है ये सवाल बहुत आम है, आते भी होंगे कि प्लेसमेंट का क्या रेशो है और इंटर्नशिप का क्या रेशो है। तो अगर इसको भी आप हाईलाइट कर दें, कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी आप दे दें। जी, जैसे प्रोफेसर चंद्रा ने पहले कहा, हमारे यहाँ एक संस्था है जिसका नाम है करियर डेवलपमेंट सेंटर। सो ऑल स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ द करियर डेवलपमेंट सेंटर एंड कैन गेट एड फ्रॉम द करियर डेवलपमेंट सेंटर टू फाइंड अ जॉब। एंड द वे दैट इट वर्क्स इज, as soon as you join, the career development center starts working with you to help you develop a profile, because companies are not only looking for knowledge, they are also looking for things like communication, soft skills, like how do you work with other team members, how do you build a resume. So all of these things are, some training is given to you, some perspectives are shared, and you also need to understand what kind of organizations you would like to work for. So some process of this kind happens through the semesters. In the 5th and the 6th semesters, you are introduced to a lot of skills, and you're also told about what kind of organizations you want to work in. Then in the 7th and the 8th semester, these organizations actually come on campus and do interviews with you. Sometimes they will tell, they send a requirement saying these are the kind of students we are looking for, and the students can apply. Now this process sort of continues through the process thing, and as Professor Chandra said, about 95% of the students get placed while they are on the campus itself, and some of them continue looking for it a little later. The interesting thing, of course, also is that a lot of our students come from backgrounds where they have businesses, family businesses. So some students go for family businesses, and a large number of students also decide to go and study in different institutions doing their masters or other programs. The CDC also helps students in finding some of these institutions and how they can prepare for this. So we have an Office of International Affairs which also supports students in preparing their portfolio for applying to universities abroad. And a lot of students go to some of the best universities around the world. In the companies section, I mean, I can't name all of the companies, but maybe I can name a few. There's Adani Wilmar, there's Arvind Mills, there's Aditya Birla Fashion and Retail, there's Airtel, Vodafone, Berger Paints, Asian Paints, Cadila Pharmaceuticals, Galaxy Surfactants, Torrent Pharmaceuticals. So Ahmedabad is a pharmaceutical hub. So a lot of pharmaceutical companies also come and recruit from our campus. एक और अहम सवाल जो है कि हाउसिंग और हॉस्टल फैसिलिटीज को लेकर के, उसमें भी मैं समझना चाहूंगी कि क्या ऐसी फैसिलिटीज हैं जो अवेलेबल हैं, और क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को जब छोड़ करके जाते हैं तो देखते हैं कि कोई परेशानी ना हो खाने को लेकर के, रहने को लेकर के और सेफ्टी वाइज। बिल्कुल, और ये इसका बहुत ख्याल रखा है जब हमने भी एक विचार किया कि किस टाइप के हाउसिंग फैसिलिटीज हमको हमारे पास होने चाहिए। तो currently we have tied up with an entrepreneurial firm called Feels Like Home, and we have some hostels for students. These are exclusive hostels for Ahmedabad University students, and they are located about 500 meters to 800 meters from the campus. We also have a shuttle that goes from the from the hostel to the campus, but it's a walkable distance, and Ahmedabad is a very safe city.
and most of the students actually do walk and go. The shuttle is available even at late night for the students to go. So there is really no fear really of any safety issues. Also, I think the hostels are very nice, and really it's very difficult to speak like this about them. But I would really urge parents कि वो आए, visit करें और देखें कैसा कैसे प्रोसेसेस हैं, कैसे facilities। मुझे लगता है कि यही कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो एक स्टूडेंट, क्योंकि 12th के बाद आप फैमिली के एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसके बाद से सीधा आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, साथ वक्त आ गया है हमारे ऑडियंस के क्वेश्चंस लेने का। तो मैं आग्रह करूंगी कि ऑडियंस के क्वेश्चंस आप प्लीज आंसर करिए। ठीक है, थैंक यू स्मृति। एडमिशंस का टैब मिलेगा, वहां आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर बीटेक के एडमिशंस में क्लिक करके अप्लाई करना है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करना है, वो आपका ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद आपको कुछ, जैसे मैंने कहा, आपको कुछ डिटेल्स भरनी है, और आपको जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो 3 चीजें हैं। एक है कि आप ने 12वीं इस साल या पिछले साल किया है तो कुछ आपके मार्क्स देखे जाते हैं जो AICTE की रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो है कि आपने कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम लिया है कि नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग सिस्टम इज स्टिल पार्टली ड्रिवन बाय सर्टेन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। तो एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे कोई स्टेट का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है या IIT JEE का एग्जाम है, तो उसके आपको मार्क्स सबमिट करने पड़ते हैं, और ये दोनों को हम जॉइंटली देखते हैं और उसके बेसिस पे हम आपको एडमिशन ऑफर करते हैं। Okay, thanks. But Adnan is saying, does your university have only science and engineering? I want to study economics. Adnan, हमारे यहाँ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज हैं जो कि BA इकोनॉमिक्स में BA ऑनर्स ऑफर करते हैं, और तो आप जैसे पार्थ ने बताया, आप भी एडमिशंस प्रोग्राम में जाके देख सकते हैं। और एक हमारा प्रोग्राम्स का भी बटन है ऑन द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या कोर्सेज हैं, क्या सब्जेक्ट है, क्या पेपर है, क्या चीजें पढ़ाई जा रही हैं, कौन कौन प्रोफेसर हैं, ये सब भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम रिद्धि, this may be for Professor Kale, and Riddhi is saying, I'm from Patna, very happy to see Ahmedabad is safe for girls. Are a lot of girls doing mechanical engineering there? Okay, it's a good question and something of a little bit concern to us. Yes, this current batch that just graduated at 3 girls, but we are hoping we'll get a big group of girls so that you don't feel alone in a class of 30, 40, 50 boys. So by all means, do come, and we hope there'll be more girls in the class. I'm told by Parth that this year the number of girls in the engineering school has increased a little bit. There's a last question, there are 2 more. One is for Professor Rangarajan. He says, how is your BS physics different? The BS physics... This is from Ayush. Okay. There are a couple of differences between the BS Honors in Physics program at Ahmedabad University and a Bachelor of Science in Physics you can get at many other places. देखिए, जो Bachelor of Science Physics program है, उसमें टॉपिक्स तो मोर और लेस जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी इन मैग्नेटिज्म, मैथमेटिक्स, वो सब कोई भी जगह में आपको पढ़ना पड़ता है। फर्क क्या है कि कौन पढ़ा रहा है आपको और कैसे पढ़ा रहे हैं। जो जैसे मैंने पहले कहा, जो पढ़ा रहे हैं वो रिसर्चर्स हैं, तो वो जैसे द क्लास में जो डिस्कशन होते हैं वो अलग से होंगे। कैसे पढ़ा रहे हैं, हमारे जैसे हमारे जो एग्जाम्स होते हैं साइंस में और फिजिक्स में, ये नहीं है कि आप एक डेरिवेशन जो है आपने उसको मेमोराइज किया और उसका आप उत्तर लिख लें। नहीं, हम आपको प्रॉब्लम्स देंगे, वीकली असाइनमेंट्स होते हैं या हर 10 दिन कुछ असाइनमेंट है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं।
और एग्जाम में जो आपने सीखा है वो अप्लाई करके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वही प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तीसरा है कि हमारे प्रोग्राम में फाइनल ईयर में आपको थीसिस करना पड़ता है, नहीं तो ये जो ग्रुप कैपस्टोन प्रोजेक्ट करना पड़ता है। ये आप फैकल्टी के गाइडेंस के अंदर करेंगे एंड आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि रिसर्च करने के लिए। चौथा है कि ऐसा नहीं है कि आपको यू हैव टू वेट टिल द 4th ईयर टू डू रिसर्च। वी कीप टेलिंग आवर स्टूडेंट्स, अपने प्रोफेसर को जाके तंग कीजिए, मुझे आपके लैब में आके काम करना है, मुझे आपके साथ आपका डेटा जो है उसका एनालिसिस करना है। पहला प्रोफेसर थोड़े बिजी होंगे तो दूसरे प्रोफेसर आपसे कहेंगे अच्छा आइए, ये काम है, और आपको एक मौका मिलता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही कि रिसर्च कैसे होता है। सो दिस आई थिंक मेक्स द बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन फिजिक्स वेरी यूनिक। बट आई विल रीइटरेट वन थिंग, हमारे यहाँ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन है और फिजिक्स के साथ आप फिलॉसफी और हिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। इन द लॉन्ग रन, आई एम अ प्रैक्टिसिंग फिजिसिस्ट, आई विल टेल यू, जैसे प्रोफेसर चंद्रा ने कहा, यू विल बी आप एक बेहतर फिजिसिस्ट बनोगे जिसने फिलॉसफी और हिस्ट्री भी पढ़ा है। And you may want to add a comment on your blank lab as well. हाँ, हमारा जो, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे जो लैब्स हैं फिजिक्स में, स्टैंडर्ड लैब क्या होता है कोई भी कॉलेज में, दिस इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दिस इज द इक्विपमेंट, ये है प्रोसीजर, और आप एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कीजिए और वो जो डेटा मिलता है उसका कुछ एनालिसिस कीजिए। हमारे यहाँ कंप्लीटली डिफरेंट है। आप एक लैब में आएंगे, वहां कुछ इक्विपमेंट नहीं होगा, वी कॉल इट ब्लैंक लैब्स, क्योंकि सिर्फ टेबल है और उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है। आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, आपको ग्रुप में सोचना पड़ेगा कि ये प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए मुझे क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। वो एक्सपेरिमेंट को आपको डिजाइन करना पड़ेगा, इक्विपमेंट आपको खुद बनाना पड़ेगा। आई शुड ऐड, बजट रिस्ट्रिक्शन है 300 रुपए का, तो आपको अपने हाथों से सब बनाना पड़ता है, और फिर आप डेटा लेते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। दिस इज एन एक्सीलेंट ट्रेनिंग इन बिकमिंग एन एक्सपेरिमेंटलिस्ट, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। And I must also say कि जो आप थीसिस कर रहे हैं और जो रिसर्च की ट्रेनिंग है, जो लोग बाद में इवन जाके मास्टर्स या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक है आपके लिए। लास्ट सवाल में हार्दवी ने पूछा है, उन्होंने कहा एज एन आर्ट स्टूडेंट आई कांट गेट टू MBA with the dual degree, can I do that? Will I not need any management subjects background? Hardly, that's the whole intent of this new program that we've been talking about, called BA MBA program. You can get to do a subject or a major in BA which you really love, which you're passionate about, which you want to study, but at the same time you can get a dual degree and do an MBA by spending just one additional year through this program called BA MBA. Now, to the question, oh, can I do it? Answer is yes, of course you can do it. We've designed the program in such a way where you start to take courses in management from your 3rd year, you'll prepare for it in your 4th year, and you actually, in your final year, you go and sit with the MBA students. So the core curriculum is designed in a manner where you can actually prepare you. That's our responsibility, to prepare you with all the managerial inputs that might be required. By the way, let me tell you, lots of engineers who get to go and do MBA don't have any management training in their undergraduate days. So you are as good as anyone else doing this BA and then getting into an MBA program. So that's, I think that brings to an end to the questions. I don't think we have any other, but अगर आपके पास सवाल हैं तो आप भेज दीजिएगा, and we can answer those for you by email as well. Smriti?
एब्सोल्युटली प्रोफेसर चंद्रा, और मुझे लगता है कि एक जो भी एक अमूमन किसी भी स्टूडेंट के मन में सवाल होंगे वो मैक्सिमम तो हमने कवर कर ही लें। इसके बावजूद भी अगर कुछ रह जाते हैं तो यू कैन डेफिनेटली पोस्ट, हम बाद में भी उनको आंसर कर सकते हैं। और इसी के साथ वक्त आ गया है इस वेबिनार को समाप्त करने का। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे पैनलिस्ट का, प्रोफेसर पंकज चंद्रा जी, प्रोफेसर राघवन रंगराजन जी, प्रोफेसर सुनील काले जी एंड मिस्टर पार्थ सरवते जी। दैनिक जागरण और अहमदाबाद यूनिवर्सिटी जिनके कोलैबोरेशन से आज हम इस वेबिनार को मुमकिन कर पाए हैं, आपका आभार। हमारे ऑडियंस में हिस्सा लेने के लिए हमारे दर्शकों का भी तहे दिल से धन्यवाद, इस उम्मीद के साथ कि ये वेबिनार सफल रहा उन सभी पहलुओं पर इंसाइट्स देने में जो कि अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स के मन में होते हैं। इसी के साथ आप सभी के सहयोग का एक बार फिर से आभार। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।